Assalamu alaikum everyone. As is the tradition at Madina, we'll start the function with the Khirat of Quran Pak. I request Mr. Mohammed Saeed to please come onto the dais and recite a few verses of the Quran. Mr. Mohammed Saeed. Saeed, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. A very good evening. And in fact, the evening we look forward to the most as a society every year. This is because of the collection of minds, intellect, and achievement under one roof. Welcome to the 33rd MADINA Gold Medal Awards function. This celebration of achievement within the community started in 1989 by my father, late Mr. K. Marifuddin Sahab, the founder secretary of Madina Educational Welfare Society. What started as a mission to help the community in Medina, Saudi Arabia, there is a brief history behind that, and inshallah, when we meet together sometime on a personal level, I'll let you know. In 1932, became an educational behemoth later on. In 1980, this particular school where you're sitting right now started and became an instant hit among Muslims of Hyderabad, as this was as a quality of education found here, and especially with the combination of having Diniyat as a subject and Urdu as a language, compulsory language in an English medium school was unheard of, and the quality of education obviously. This started a chain reaction within the society wherein we started the Madina Degree and PG College for women, because back then the education of women was a challenge. And nowadays, as most education are saying, the concentration should be more on boys now rather than girls, but back then it was more on girls. So the Madina Junior College for girls and the PG and Degree College for girls was started. Then the boys, Madina Junior College, BEd, MBA, engineering, pharmacy, the technical colleges under the banner of Global Group of Institutions. The latest being the school at Nampally in 2018. And the keyword, please understand this, the keyword here being quality, not quantity. Madina High School, this very school where you're sitting right now, has received the Best School Award twice from the government of Andhra Pradesh, United Andhra Pradesh, by the then Chief Minister, Mr. N. Chandrababu Naidu, in 1999 and 2001. Our engineering college, our vice principal sir is sitting right here, he can attest to that, has been accredited by NAC in an A plus category. The metric for the accreditation is A plus, and that is only among 18 or 19 colleges all over Telangana. Our pharmacy college has an NBA accreditation, National Board of Accreditation by the Government of India, which is among 2 or 3 colleges all over Telangana. Coming to the gold medals,
My father, Mr. K. Marifuddin, started this for the sole reason of motivating our children and community, which is not just Madina and its students, but students from outside also. Not just in Hyderabad, also Telangana, South India, and sometimes many from North India have also received these medals. So the concept was to create a legacy wherein an elite community, elite as in, we're not talking about any monetary metric, but a metric of intellect and academic excellence. So we wanted to create a legacy of an elite community within community who have received these awards. And one such alumni of this particular gold medal award is sitting right here with us on the stage with Professor Amirullah Khan sir. And we are extremely proud of him. And some of us, like Dr. Danish Mehdi, sitting right over here, he's an alumni of our school and also these gold medal awards. And many, I'm sure, many such are there, including Asaduddin Owaisi Sahab, Ghayasuddin Babu Khan Sahab, Latif Khan Sahab of MS Group of Institutions, Abdul Khadir Sahab of Shaheen Group, and many such people have received these medals, including many doctors and academicians and engineers and many such lawyers. And the medals also have the seal of the Prophet, which is the Mohr Nabuwat, on them, so that the value remains even after 30, 40, 50 years. Some of the best minds who have come out of Hyderabad have received these medals over the years. These, as I mentioned, include many such VIPs and similar in a similar category, many such people. And when I was recently in America 6 months back, I came to know that there is a certain group created where the people who have received these medals connect with each other, and that has created a small network among networks. And that was a proud moment for me when I heard that. And this is the story behind the group of institutions and the medal which have started recently. So I welcome all of you and thank you so much for taking your time and coming. Especially guests, Professor Amirullah Khan Sahab, Manzoor Hussain Sahab, Professor Manzoor Hussain Sahab, Ziauddin Nayyar Sahab, all of you out of your very busy schedule and especially on weekends that I can understand. Thank you so much for taking your time. Now I request the Secretary of Madina Education Welfare Society, Mrs. Sabia Farzana Sahiba, to please address the gathering. Assalamu alaikum and a very good evening to you all and a very warm welcome. आज 33rd गोल्ड मेडल फंक्शन में आप सबसे मुखातिब होते मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है। आरिफुद्दीन साहब का एक डेरिंग ख्वाब था कि बच्चों को प्रमोट किया जाए, उनको एनकरेज किया जाए। अपने बच्चे अपने स्कूल में तो अवार्ड लेते ही हैं। ये गोल्ड मेडल ऐसी चीज़ थी जो कि कोई भी अप्लाई करता है और कोई भी जो टॉप करता है वो हासिल करता है, एक एनकरेजमेंट है। ये बात नहीं कि ये मेडल बहुत बड़ी चीज़ है, आप सबकी काबिलियत के आगे तो छोटी चीज़ है ये, लेकिन अहमियत इसकी जब बढ़ जाती है जब इस पर मोहर नबूवत करना होती है। और पहला जो लफ्ज़ था इक़रा, तो इसकी अहमियत का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज जो मेहमान मौजूद है यहाँ पर नैयर साहब हैं। नैयर भाई बहुत पुराने ताल्लुकात मदीना इंस्टीट्यूशन से उनके रहे हैं, तामीर मिलत के सरकर्ता हैं और न जाने कितनी किताबों के वो ऑथर हैं। बड़े बहुत अप्रोप्रिएट पर्सन है आप लोगों के इंकरेजमेंट के लिए। फिर अस्करी साहब हैं, सोशल वर्क में उनका नाम कौन नहीं जानता। सिर्फ तालीम हासिल करना तो बहुत नेक मकसद है, लेकिन तालीम को फिर इम्प्लीमेंट करना और टू गिव बैक टू द सोसाइटी, टू द कम्युनिटी, टू द नेशन, ये तो अस्करी साहब, इस बात के लिए तो मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। आपने जो हासिल किया वह आप गिव बैक कर रहे हैं कम्युनिटी को। आप थोड़ा सा यूट्यूब पर जाकर आपके बारे में जानिए, इंट्रोडक्शन तो होगा ही। फिर आमिरुल्लाह खान है, आमिर हैं, बहुत शॉर्ट टाइम बड़ी मुश्किल से आए हैं। वो बता रहे थे कि कुछ आज सुबह से कितने बच्चों ने एग्जाम लिखा, 31,000 बच्चों ने कोई इम्तिहान कंडक्ट करते रहते हैं, कुछ काम करते ही रहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आए हैं वो बहुत अप्रोप्रिएट। इकोनॉमिक्स में तो इनका कोई हैदराबाद में तो कोई सानी नहीं है, बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स है, वर्ल्ड रिनाउंड। ये इंकरेजमेंट के लिए आप सबके लिए बहुत ही मौजूद शख्सियत है। मंजूर हुसैन साहब कई बार मिल चुकी हूँ मैं,
दूसरा JNUH, यहाँ पर रिटायर्ड लिखा हुआ है, नहीं, प्रोफेसर हमेशा प्रोफेसर ही होता है, रिटायरमेंट नहीं होता उनका. He can be called professor anytime throughout the life. मंजूर साहब, आपका भी खैर मकदम करती हूँ मैं. इतनी काबिल शख्सियतें जमा हैं यहाँ पर. ये इसलिए बुलाया जाता है, ये मदीना का रिकॉर्ड है. ये तो खैर तालीमी इल्मी जलसा है, नहीं तो भी चाहे कल्चरल प्रोग्राम हो, चाहे ड्रामेटिक्स हो, चाहे कुछ भी हो, कभी भी हमने ऐसे सेलिब्रिटीज को नहीं बुलाया जो कि नॉन एकेडमिशियन है. या तो पॉलिटिशियन होंगे, आला अहदेदार हैं, या आला ओहदे पर फायज लोग हैं, या वाइस चांसलर्स हैं, जजेस हैं, वकला हैं. ऐसे कभी नो हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड. अभी मेरे बाजू बैठे थे जो पेरेंट भी हैं स्कूल के, और अल्लाह करे आपके बच्चों पे भी यही असर पड़े कि वो भी इतना मेहनत से पढ़ें और आगे बढ़ें. बच्चे तो आज जो रिसीव करने हैं गोल्ड मेडल, काबिल मुबारकबाद हैं ही. पता नहीं, देखिए कि आप लोग कभी बीमार नहीं पड़े होंगे, सारे इम्तिहानात लेते हैं, क्या आपके माँ बाप का भी तवज्जो नहीं दिए होंगे? ऐसा सवाल पैदा नहीं होता. आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इतने अपने काबिलियत का आपने लोहा मनवाया है, वो इस बात का सबूत है कि आपने कितनी मेहनत मशक्कत की होगी और उसके लिए कितनी नई कुर्बानियाँ दी होंगी. इंग्लिश में हमारे टीचर कहते थे कि सफ़र नाउ एंजॉय लेटर, या नहीं तो एंजॉय नाउ सफ़र द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. 20-22 साल का तालीमी, 25 साल एट द मोस्ट PhD करते हैं. उतने साल अगर मेहनत नहीं करते हैं तो अल्लाह करे आप सबके 100 साल के बाद 80 साल सफ़र होंगे अगर अब मेहनत नहीं करेंगे. अब थोड़ा सा कुर्बानी देके अपनी खुशियों का, अपने ख्वाहिशात की. अभी बात हो रही थी कि ट्रैफिक कितनी है, तो मैंने बताया कि देखिए 10th इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, PG, एनी लेवल, हैदराबाद सिटी का रिजल्ट सबसे खराब होता है एकेडमिक. जरा आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पर शहरों में एंटरटेनमेंट बहुत होते हैं. इतने एंटरटेनमेंट की बच्चों को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता. पेरेंट्स भी इंकरेज करते हैं, अरे मॉल को चले जाएंगे, अरे बच्चों का पिक्चर है चले जाएंगे, अरे पार्टी है आज, बर्थडे पार्टी, फला फला सेलिब्रेशन. तो एंटरटेनमेंट सिटीज में इतने होते हैं. इसके बावजूद भी, जब आप ज़्यादातर हैदराबाद के होंगे शायद, इसके बावजूद भी आपने यहाँ तक अचीव किया, इसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ आपको. स्पेशली जो छोटे लेवल के बच्चे यहाँ पर हैं, 10th और इंटरमीडिएट के BA के, माँ बाप से मैं कहूँगी, वालिदैन से, कि जो लड़कियाँ हैं जो हायर लेवल के तो फारिग हो चुके हैं, लेकिन जो लो लेवल की लड़कियाँ हैं, अभी लो ग्रेड्स में हैं, उनको तालीम से मुनक़ता उनकी मत होने दीजिए. तालीम मुकम्मल कीजिए. आरिफ साहब कहते थे कि जब अल्लाह ताला ने चुमटी का जोड़ा बनाया है तो इंसान का नहीं होगा. तो लड़कियों की शादी में उजरत मत कीजिए, उनको तालीम डिग्री पूरी करने दीजिए. नहीं तो मैं 30 साल कॉलेज में बैठी, डिग्री कॉलेज में, BA में आते आते बच्चों की शादियाँ तो क्लास में आके सो जाती है पीछे की बेंच पे. फिर सास कहती है कि अब रोटी कौन दाना, डिग्री लाके से कुछ तुम्हारे. एक्चुअली वर्ड से मैं जो सुनती थी वहाँ पर. तो बच्चियों के तालीम को मुनक़ता मत कीजिए, पूरा होने दीजिए. एक और, क्योंकि मौका है, आप सब साहबे समझ लोग हैं, बहुत हाई कैलिबर के बच्चे और पेरेंट्स हैं. हम लोग अपने आप की बड़ा खफा रहते हैं, तो लेकिन अपने 5 साल में एक बार या जो भी इलेक्शन आते हैं, आपके नाखून पर निशान होना चाहिए. कभी इलेक्शन मिस मत कीजिए. यही एक हम चेंज ला सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है जहाँ पर सरों को तोला नहीं जाता, गिना जाता है. हमको अपना लोहा मनाना है और इलेक्शन कोई मिस मत कीजिए. ये मेरा विश्वास है. मैं गुजारिश करूंगा the president of the function and also president of Majlis Tamir Millet Ziauddin Nayyar साहब
to present the mementos and bouquets to the guests. Ziauddin Nayyar साहब, आप मंसूर साहब, आमिरुल्लाह खान साहब, सर अस्करी साहब को आप अगर memento bouquets present करें. Ziauddin Nayyar साहब, president of the function, and he is the president of All India Majlis Tamir Millat, presenting the bouquet to Professor Manzoor Hussain साहब. The memento also to Professor Manzoor Hussain Sahab. I request Nayyar Sahab to present the bouquet and memento to Professor Amirullah Khan Sahab. Now I request Secretary Madina Educational Welfare Society, Sabia Farzana Sahiba, to present the memento to Ziauddin Nayyar Sahab. Thank you. Because some of the guests are on a tight schedule, we'll try to start and finish as soon as possible. A small introduction on our chief guest today before calling him onto the dais to address you. Professor Amirullah Khan Sahab is an economist and professor working in development issues in health, education, and agriculture. He has worked with the Ministry of Finance. By the way, if I say it word to word from wherever I got it from, it will take the whole night. So I'll keep it as short as possible, with your permission, sir. And he has worked with Ministry of Finance, Government of India, and the UN, and many such organizations. He is a former deputy director and policy advisor to the Bill and Melinda Gates Foundation, and he is a regular columnist for business news publication Live Mint and also HYDERABAD Urdu Daily. He is a member of the Public Service Commission right now, the recently concluded Group 1 exams. He's part of the Public Service Commission. He is a visiting professor at ISB, Indian School of Business, the most respected ISB, and also Nalsar, if not the most, one of the most premier law institutes in India. He is a member of the board of many prominent institutions like Presidency University, Bangalore, Welham Girls School. He was a part of the Sudhir Commission formed by the Telangana government, Sudhir Commission. And he is executive director and editor at Encyclopedia Britannica. He has worked on many research projects for European Commission, National Council for Applied Economic Research, Planning Commission, CII, and World Bank, and many such organizations. He also joined, by the way, the Indian Civil Service in 1993, of the 1993 batch, and I think he was 1 year senior to my brother, Mr. K. Raziuddin. He was from the 1994 batch. He also gave a lecture at the prestigious, the world-renowned Harvard University School of Public Health on the Indian growth story. He is one of the guests, and everyone knows this, and one of my role models. I say this openly, of our community. We need to preserve, and all of us need to work towards preserving him and utilizing him as much as possible. And as far as I know, all the organizations in Hyderabad and surrounding want to be associated with him and want him to be associated with their organizations. And one of these organizations is also Madina. And we are thankful to Allah that we know him personally. He is a family friend also. And apart from that, we learn a lot from him on a day-to-day basis. Ahmed Sahab, I request you to please address the gathering. Thank you. Thank you so much, Fasi. बहुत शुक्रिया सबिया आंटी for calling me today. ये hall और ये gathering, this stage, this is very familiar to me. मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ इस जगह से, आप सब लोगों से, इन सब लोगों से जो यहाँ बैठे हैं. और ever since this institution started, ever since this award function started, I have been associated with it, and I feel very proud that after all the introduction that Fasi read out, my simple introduction is that I am among the earliest recipients of this award, and I carry that with great pride.
my, as I said that there is, and as Wasi also said, मेरा ताल्लुक इस इंस्टीट्यूशन से, इस इदारे से, इन लोगों से बहुत पुराना है. आरिफ भाई तो was somebody who all of us not just looked up to, not just went and spoke to for inspiration or for advice, but he was in a lot of ways a very unique person. And after his passing away, मैं अक्सर याद करता हूँ. और and at strange times, वो एक शेर है कि तबीयत जब घबराती है इन सुनसान राहों में, मैं उनकी यादों की चादर तान लेता हूँ. And that applies to Arif. Whenever there is something that I feel is very disturbing in this country, and there are a lot of disturbing things happening, I go back to think what would he have said, how would he have reacted, and it's of great solace to me to think कि अच्छा आरिफ भाई शायद इस तरह उसका जवाब देते या इस तरह सोचते. In cities, in communities, there are some people whose going away creates a void, creates a space जो फिर कभी फिर भरती नहीं किसी और से. And Arif bhai is one of those people. His going away has created that void in Hyderabad particularly, which till now nobody has been able to fulfill, and I don't know when he will be replaced, or he can be replaced by somebody. I am hoping his really fabulous children very quickly take up that space. It's very large shoes to fill, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही. मैं जो पहली बात, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ, वो अगर आप इस डायस पे बैठे हुए लोगों को देखें तो इन सब का एक बड़ा अजीब सा और बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिश्ता इस साल की नोबेल प्राइज. इस साल का नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स में दिया गया, वो 3 लोगों को दिया गया, जिसमें से सबसे मशहूर एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर एसिमोव. 2 और प्रोफेसर, 3 लोगों को इस साल का नोबेल प्राइज मिला. उनका उस नोबेल प्राइज आप सब जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज होता है. तो लेकिन इन लोगों से क्या ताल्लुक है उसका, इन सब लोगों से आप इनको 2-3 बार देख लीजिए और फिर समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ. इस साल के नोबेल प्राइज ने ये कहा, उनका जो पूरी राइटिंग है, उनकी जो सारी पब्लिकेशन है, वो 1-2 जुमलों में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये कहा कि वो मुल्क तरक्की करते हैं, वो मुल्क प्रॉस्पेरस होते हैं जिन मुल्कों में इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, जिन मुल्कों में इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट होते. बस यही है, इतना सा जुमला है. उसको उन्होंने तारीख के कई पहलुओं से, कई जगहों को देख के ये प्रूव किया कि आप जहाँ पे भी देखिए मुल्कों में तरक्की और खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं उसको, उन्हीं मुल्कों में होती है जहाँ के इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होते हैं, लोग नहीं. तो जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो मुल्क ज्यादा तरक्की नहीं करता. लेकिन वो मुल्क तरक्की करते हैं जिनके इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होते हैं. दुनिया के जो अमीर मुल्क हैं वो कौन से मुल्क हैं? जो सबसे खुशहाल मुल्क हैं, जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक 1, 2, 3, 4 है, वो है स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड. इन कंट्रीज में से किसी शख्स को जानते हैं आप? स्विट्जरलैंड, कोई मशहूर स्विस को का नाम कभी सुना है? लेकिन आप गरीब मुल्क देखिए, तंजानिया, वो जोमो कन्याटा का नाम सब जानते हैं. इजराइल, नेतन्याहू का नाम सब लोग जानते हैं. तो बड़े मुल्कों में इंस्टीट्यूशंस को जानते हैं, बड़े मुल्कों में लोगों को नहीं जानते. उसी किस्म के ये लोग हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए, जिनके बाद भी ये इंस्टीट्यूशन चलेंगे. आरिफ भाई का बड़ा जो रोल रहा वो ये that he set up this fabulous group of institutions that thrives even after he has gone. It was not an individual who was doing work for himself, and it was not an individual who was very strong, very
upright, very commanding, who ensured that मेरा कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, मेरे बाद ये इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएगी। अच्छे मुल्क, अच्छी सियासत, अच्छी लीडरशिप वो होती है जो इंस्टीट्यूशन बनाती है। आप वहां से शुरू करिए। मुश्तबा, कुछ लोग जानते हैं मुश्तबा का नाम, लेकिन सारा मुल्क हेल्पिंग हैंड जानता है कि इस मुल्क में अगर कोई ऐसा इदारा है जो वाकई गरीब लोगों की, बहुत गरीब लोगों की सेहत के लिए काम करता है। एजुकेशन के इंस्टीट्यूट बहुत है इंडिया में, एम्प्लॉयमेंट, स्किल, इन सब के बहुत बड़े एनजीओज हैं। आप सेहत वाले देखिए, हेल्थ केयर वाले देखिए, आप दो नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत मुश्किल एरिया है। उसमें मुश्तबा ने जो काम किया है और उनका जो इंस्टीट्यूशन है हेल्पिंग हैंड्स, उस जैसा कोई इदारा, और मैं बहुत से ऐसे इदारों से वाकिफ हूँ क्योंकि मैं हेल्थ पे बहुत काम करता था, इन जैसा इदारा, इतना सक्सेसफुल और इतना इम्पैक्टफुल इदारा आपको नहीं मिलेगा। दैट इज वाई दिस गोल्ड मेडल इज रियली, आई डिडंट नो कि मुश्तबा को मिल रहा है गोल्ड मेडल, क्योंकि मैं क्लियरली बायस्ड हूँ। अगर मैं जूरी पे रहता तो वैसे ही दे देता, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि इसको मिल रहा है। एंड आई कैन टेल यू दैट इट इज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट हु हैज गॉट इट, नॉट सो मच बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल हार्ड वर्क दैट हैज गॉन इनटू, और मैं उस हार्ड वर्क का बिल्कुल चश्मदीद गवाह हूँ, बट इसलिए कि उन्होंने एक ऐसा इदारा कायम किया है जो हमारे लिए बिल्कुल इनवैल्यूएबल है। प्रोफेसर साहब की बात आंटी ने की, 30-35 साल से अगर एक यूनिवर्सिटी है जो हमारे कंबाइंड आंध्र प्रदेश की सबसे शानदार यूनिवर्सिटी रही है टेक्नोलॉजी की, उसके ये सरबराह रहे हैं। एंड एज द रजिस्ट्रार ही इज बीन द पर्सन हु हैज टेकन JNTU टू दैट लेवल जो आजकल बहुत कम यूनिवर्सिटी। एज एन एकेडमिक, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एब्सोल्युटली फैबुलस। नैयर भाई हैज, उनको तो मैं जब से वो वापस आए हैं इंडिया, तब से उनकी हर कोशिश, हर इदारे में हम चाहते हैं कि इनकी कुछ मदद करें, क्योंकि ये उस पैमाने पे काम करते हैं जिसका बहुत कम लोगों को अंदाजा हो सकता है। तो नैयर भाई के लिए मैं तो बिल्कुल आई कांट इवन से एनीथिंग एक्सेप्ट दैट मेरा जो पर्सनल ताल्लुक है उनसे, वो एक शाज तमकनत का एक शेर है, वो उससे जाहिर हो जाता है मेरा ताल्लुक नैयर भाई से, कि क्या शेर है, उसका होना भी भरी बज़्म में है वजह सुकून। उसका होना भी आसान है, आप सब लोग समझ जाएंगे। उसका होना भी भरी बज़्म में है वजह सुकून, कुछ ना बोले तो भी मेरे को मेरा तरफदार लगे। So in most things that we do, several people like me, we look up to him, and if he says you are doing all right, then it is of great strength to us. Finally, मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद दूं, जो आपने ये गोल्ड मेडल और ये सारे राउंड्स में हुए हैं। आप, this is being really wonderful and very distinguished. I must congratulate all of you. Several of you are very young, all of you in fact, and therefore you have a long career in front of you. I only want to wish you the best. मैं जो एक सलाहियत again which is common to everybody sitting here, वो आप लोगों से शेयर करता चलूं कि ये सब सारे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, और मेरी खुशकिस्मती रही कि मैं इन कुछ सक्सेसफुल लोगों के साथ बड़ी क्लोजली काम किया, और जो एक कॉमन फीचर देखा इन सब लोगों का जो बहुत अचीव कर चुके हैं और बहुत बड़े लोग हैं, बहुत माने हुए लोग हैं, इनकी एक खास बात जो सब में होती है इन सब लोगों में, और यही एक खास बात मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें, और वो है कि जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं अक्सर, with very few exceptions, these are people who are very humble. ये हमेशा बहुत इनकिसारी से काम करते हैं,
इन सब लोगों में कभी आप ये नहीं दिखेंगे कि अच्छा मैंने ये कर दिया या मेरे से ये हो गया है, मैंने उससे ये कह दिया. इनका वजूद ही और इनकी सक्सेस is because of their humility. And it is humility that makes you learn. It is this humility that makes you prosperous. It is humility that makes you go far. Because जैसे ही आप arrogant हो गए, जैसे ही आपको ये समझ में आने लगा कि मेरे से ज्यादा तो किसी को आता नहीं या मैं सबसे बड़ी चीज हूँ, वहां पे आप you have stopped there. There is no reason for you to grow because you have reached the end of your goal. Keep that humility alive. Keep that simplicity alive. That is the inspiration that you will get from people like Mustafa. Thank you. Thank you, sir. And as usual, your talk inspires a lot, motivates a lot, including myself. And as you were speaking about organizations, I would like to point out a couple of people sitting right in the front row, sir. In the black jacket is Dr. G.M. Zishan, sir, a Vice Principal of Engineering College Global, and Khadija Nusrat ma'am, the Vice Principal of Madina Public School. Both of them are backbones of these institutions, sir. And without, as you said, the organization is a big organization and it includes multiple people. And we are just sitting on the stage because of all of them, I must say. I would like to introduce now Professor Dr. Manzoor Hussain Sahab, who is, as Amir Sahab and Secretary Ma'am before that said so, was the registrar of the biggest technical university in India, JNTU, and many of you must be students of JNTU Welsh. And the thing is, people working behind the scenes generally don't know their names, and this is the whole idea of the function, because this is a very academic and intellectual function. We would like you to know these people sitting on the stage, Professor Amarullah Khan Sahab, and you have no idea some of the things they have done and some of the things they have organizations they have headed or they have achieved. Like Professor Manzoor Hussain Sahab, he received the Best Teacher Award in 2017 by the Telangana government from the Higher Education Department. Meritorious Teacher of the Year in 2016. He is the founding principal of JNUH College of Engineering Sultanpur Sangareddy, established in 2012. See, being the founding principal is not easy because I have seen him working towards it and I've heard about what all they have to go through. Because see, asking the government to do something, release funds is not so easy. Everything ऐसा लगता है कि आप पहली बात तो मेहनत भी कर रहे हैं, फिर उसके बावजूद आप जो बोल रहे हैं टाइम पर होता भी नहीं है. So this is something big credit to him. Chairman, he was a chairman of Board of Studies from 2012 to 14. He has guided and supervised 7 PhDs under him. He has completed his PE Mechanical from MBSR Engineering College, MTech from JNTU, PhD from JNTU in Mechanical Engineering. He has a combined 28 years of teaching experience, with also 2 years as the head of Manufacturing and Technology Department, Defense Engineering College in Ethiopia. He has visited many countries like Ethiopia, Kuwait, Australia, Thailand, Germany on academic activities. He has published multiple books books, teaching material and papers in multiple journals. He has worked in multiple positions like as a special officer, JNUH College of Engineering Sultanpur, to start a new engineering college, coordinating with the government. And it is not easy, trust me on that. Member AICT committee for a new college establishment. Like all the new colleges to be established, he was in the committee of AICT. He was a confidential team member and co-convener of MSET. I'm sure most of you have written. He was an in charge person for the whole examination for many years. He was a special officer for part-time PhD programs in JNTU. And there are many such credentials credited to Manzoor Hussain Sahab, which I may not be able to complete today, as I said earlier. So, उन्हीं की जुबानी सुन लेंगे. Manzoor Hussain Sahab, I would like you to address the gathering, please. Assalamu alaikum. At the outset, let me congratulate all the gold medal winners. You have been selected after having a lot of scrutiny. Really, it is a motivation. And also, I congratulate and appreciate the management of Madina Education Society for conducting this 33rd gold medal awarding ceremony. This shows that the Madina Education Society
is encouraging, motivating, providing a platform for all the eminent personalities, hard work, those who are doing hard work and achieving their targets and reaching to the top level, they are being honored here. Thank you, the Madina Education Society entire team for putting this effort. As you are aware, I'm not much connected with this school, but I'm connected with the group of that is global colleges. Is a part of this group. Madina Education Society is having a higher studies in engineering and other faculties. They are doing excellent work by providing a opportunity for our students. I have seen the admissions in global engineering college and other institutions under their control. They are giving a chance to the students, those who are deserving for education. Thank you for making these efforts. As you are aware, we in Hyderabad we have various different colleges, and if you look into this, the percentage of our people working are day by day reducing. We are having a no doubt good opportunity to go abroad, maybe for Gulf countries or other countries. But it is also our duty to take care of our motherland. So I suggest, I think many are now started their own career as well as they are working. Please be a part of decision makers locally. If you are missing this opportunity, the decisions made by the government or the decisions made by any institution locally may always go against for our whatever the way we work. So I request, because very young people are here, I think you have a very good opportunity to be a part of this decision making in the society. Please contribute yourself and see that the local or within India, within our city or within our state, wherever any possibility is there, please share your opinion, share your knowledge, and see that our people will get benefited. And Madina Education Society, for years together, they are in the part of society and they are doing a great job by providing such a good institutions. And I have seen just now when they were giving the previous speakers, very eminent personalities were there. So they are all educated and they got the education in these colleges. With these few words, once again I congratulate and I thank the management for giving me this opportunity. I'm very proud to stand in front of you on this day. Really, it is a very good gathering, and thank you. All the best. As Amirullah Khan Sahab was saying, many people make an organization, and similarly, one person I would like to call next to address you is one of our directors, just like me, my own sister, Miss Maria Tabasu, who has been doing exemplary work particularly with the schools, and we are directors, part of the team of directors of the society. But she, in particular, has brought on a sea change in our schooling, especially. I would like to mention that because our colleges, I was very busy in our colleges, I could not concentrate much over here. And when she joined as part of the director team, and she has brought on so many changes, multiple changes, and as a representative of Madina Education Welfare Society, I think I speak on behalf of our secretary, Madam too. I thank her from the bottom of my heart for her exemplary work, even with multiple issues popping up here and there. She has never ever returned or stopped from working towards this. Miss Maria Tabassum, please address the gathering. Thank you. Assalamualaikum everyone, and I'm so sorry I was very late today, as some of the parents of Madina are also here of schools. So you know that we had our PTM today. It was a very long day for us. So I went home and again came back. And as soon as my brother called me, I stood up
come here, but I had to keep standing for a long time. I didn't expect such a long introduction actually. So he has said too much about me. I'm just doing my small role, and it's a very big team which is working, which is taking the schools to new heights. And the same way, the colleges are seeing new heights every day. We have very eminent people here who have seen the growth of Medina, who have seen how our father, the founder, secretary of Medina Group, has brought in a change to the society of Hyderabad by establishing standard minority institutions. And then now we have our present secretary, Sabiha Farzana ma'am, who's heading the institutions. And I'm honored to work with such a team. As we have very eminent people here. Amarullah Saab is there, Mansoor Saab is there, and then Askari Saab is there. So all from different fields and all those who have excelled in their fields. So it is our dear students whom we are addressing here today. It's not only the marks or the scores that you got that we are awarding today. We are honoring the commitment. We are honoring the dedication. The marks that you got show, the ranks that you got show that you have utmost dedication towards whatever you do, and that is what we are honoring, and that is what makes you different from others, make you the one who are deserving of this award. The students of Medina schools and other schools are also here. I can see the happy faces. So many of you got above 90 in CBSE boards. Every year we are seeing 98, 99% scores in the CBSE board. So I wonder how you people even manage that. But this is just the beginning. It's a long journey ahead. And please make sure that you continue with the same dedication and giving back to the society. As Askari Saab is here today, and you all must be knowing about the great work that he has done. I think my brother will also give his introduction very soon. But I am part of the people who are making use of his services. So he has his centers at Usmania Hospital. He has his centers, and during COVID, whatever work he has done, we have been witness to that. So this kind of giving back to the society is what will complete your journey of excellence. The journey of excellence has just started. Thank you so much. Thank you. And now I request the most senior most person and my father's very dear old friend, the Ziauddin Nier Sahab, who I don't think I am in the position to introduce him. His experience, his work, and जैसे आमिर साहब बता रहे थे खामोशी से काम करने का जो मैं उनसे सीखा हूँ खास तौर पर, that is something we all need to learn. And he is the president of a very big organization called All India Majlis Tamir Millat. शायद सभी लोग वाकिफ होंगे. And आगे मैं नैयर साहब से गुजारिश करता हूँ कि please address the gathering, the president of the function. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मोहतरमा भाभी जो यहाँ पर सबीहा फरजाना की सदारत में जलसा हो रहा है, और उनके अलावा शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ हज़रात, और मैं सच पूछे तो ये बात है कि आमिर साहब ने अपनी मुख्तसर तकरीर में इतनी बातें कही थी कि कोई बाकी नहीं रखा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहरहाल मौका है, फिर भी कुछ माइक बार बार नहीं मिलता, तो खुदाना सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, खुदाना सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबार राह को बख्शा बरोग वादिए सीना, निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बैठे बैठे, वरना इरादा तो तकरीर कुछ और करने का था, लेकिन जिस अंदाज से भाभी ने और आमिर ने सीरत सहाबा के पस मंज़र में जो बात कही, कुछ
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 14 साल या 15 साल की उम्र में थे, अबू तालिब उनके चचा ने उनको पहला सफर तिजारत के लिए सीरिया अपने साथ ले गए। और जब मदीना के करीब पहुंचे तो वहाँ एक यहूदी हाजिर हुआ और उसने कहा अबू तालिब से कि आप अपने भतीजे को वापस भेज दें क्योंकि इनकी जान को खतरा है, इनकी जान को खतरा है। लिहाजा तो अबू तालिब परेशान हो गए कि भाई अचानक ये कहता तुमको कैसे पता चला। तो अबू तालिब को जवाब दिया गया कि सारे दरख्त उनको सजदा कर रहे हैं, सारे पत्थर उनको सजदा कर रहे हैं, और सबसे अहम बात जिसने मुझे मोटिवेट किया वो ये था कि जो है आपका निशान नबूवत यहाँ पर था, मोहर नबूवत जो है वो मैं देखा हूँ और आपको मैं बता सकता हूँ। इस तयफुन पर आपको यकीन आया और आपने उनकी जान को खतरे के पेश नज़र हजरत अबू तालिब ने अपने साथियों में से कुछ लोगों को साथ करके वापस मक्का भेज दिया। तो ब्रादरान अजीज, इतना तारीखी वाक़या था। इस पस मंज़र में मैंने गुफ्तगू शुरू की। भाभी ने दो बातें मैसेज के लिए हमको दी हैं। एक तो जो है इल्म की तोसी के लिए जो काम मरहूम आरिफ भाई ने छोड़ा है लिगेसी, और उनका माशाल्लाह बच्चे बड़े ही और भाभी की क़ियादत में ये काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। और हम सारे लोगों के लिए जो प्याम आमिर ने दिया कि आप लोग इज्तिमाई तौर पे जो काम करते हैं उसकी अहमियत होती है, इनफरादी काम जो करते हैं उसकी वो अहमियत नहीं हो पाती। और इसके अलावा तो वो इतने ग्रेट राइटर हैं। आप हैदराबाद से किस किस को भेजा आपने मालूम है? अबू लाला मौदूदी को भेजा। और आप जब देखते हैं तो हैदराबाद से भेजने डॉक्टर हमीदुल्लाह हैं, और मैं इन नौजवानों में आमिर को भी समझता हूँ। और इंशाअल्लाह तामीर मिल्लत भाभी की एडवाइस पर अमल करेगी। फरोग़ तालीम के लिए हम कोशिश करेंगे। और यहाँ बड़ी खुशी होती है, कम बच्चे फसीउद्दीन और मारिया कम उम्र बच्चे ये भी आगे आए हैं खिदमत खल के लिए। अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और हम सबको ये तौफीक दे कि जो बच्चे यहाँ पर बहुत ऊंचे हाई एयर मार्क्स से पास हुए हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। ये आसान काम नहीं है, लेकिन तुम शौक से पढ़ो, पार्क में झूलो, जायज है गुबारों पे उड़ो, छत पे झूलो, पर एक सुखन नक परे आजिज कर रहे यार, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो, अल्लाह और अपनी हकीकत को न भूलो। ये बयान हमेशा साथ रहेगा। तो फिर जो इंशाअल्लाह ताला अल्लामा इकबाल का वो आखिरी बयान देते हुए मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इम्तिहान लेना नहीं चाह रहा, तुम उसे बेगाना कर दो आलमे किरदार से, ता बिसात जिंदगी में उसके मोहरे हो सब मार, खैर इसी में है क़ियामत तक रहे मोमिन गुलाम, छोड़कर औरों की खातिर ये जहान बेसबार, मस्त रखो जिक्र व फिक्र सुबह गाही में से, पुख्ता कर दो मिजाज खानखाही में से। वाह दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया बहुत बहुत ज़ियाउद्दीन साहब, हम सबके बड़े और चंद लोगों में से जिनको हक है हमारे कान भी पकड़ने का और हमें सलाम मशवरा करने का। शायद ये कोई चीज़ हम करते हैं उनके बिना। Now the time has come for the main event and all of the thing which for which all of you were waiting. So the medals to be started now, and there is one particular medal award which my father had started in 1989. Along with the academics and the academic excellence awards, there was one award he used to give every year to people who have given service to the community, unmatched service to the community, if I may say so. And there are some very rich, very amazing alumni of this particular award over the years. And this year, the award is being received by, I am naming the foundation, Helping Hand Foundation, but the man behind the foundation, Mr. Mustafa Hassan Askari Sahab. I'll give a small introduction
without taking much of your time, Mustafa Hassan Askari Sahab, sitting right over here on the dais with us, he was working in Infosys for a long time. He quit his corporate job for service to the community. That in itself is a big achievement, what many people cannot do, cannot afford to do, right? He founded Helping Hand Foundation in 2007 to create a bridge between common man and public health, focusing on public health. Since 2007 onwards, till now, he conducts a Praja Darbar every day that provides medical aid, guidance, and support to poor patients. He established help desks, the very famous help desks in all government hospitals that act as a bridge for facilitating free health services. He established 20 primary health centers in urban slums that serve 6 to 7 lakh people with free health services. Till now, they have crowdfunded over 100 crore rupees and helped more than 1 million disadvantaged people. That in itself deserves a round of applause. Over 1 lakh poor patients get relief and aid every year. Leverage the platform of masjids for comprehensive social development. That is absolutely amazing, which I have actually observed in America when I visited America, which needs to happen in Hyderabad. He fully funded 200 plus heart surgeries of children from marginalized sections. He established free dialysis centers, rehabilitation and geriatric care center. He established a free primary school for 450 children of migrant laborers. Amazing. And similarly, and the striking part of Mustafa Sahab's work has been, which in my gentle observation has been, that he never discriminates between communities. He has been doing work with all communities put together, and our colleges are actually located in Moinabad, in the village Chilkur. So I don't know, some of you might be knowing, there is a very famous temple called Chilkur Balaji Temple in Chilkur, Moinabad. And recently, when we came to know, we wanted to do some work with them for the local community around our colleges. And he himself mentioned Mustafa Sahab's work, and apparently his foundation works with the temple, Chilkur Balaji Temple, also in many such social initiatives. Absolutely amazing, and that is the particular need of the hour. And I feel most of us and all of us should start doing this. And this is, once again, I would like to say that our technical colleges, engineering, pharmacy, and MBA, are known as global for the sole reason because my father thought that because naming Madina, people are avoiding, non-Muslim people are avoiding coming to the school, and which is why the colleges were named global. So that, and what he says is, even for serving our own community, we need to have an upper ceiling, which is strong because of minority colleges, and having various people of various communities in the same institution will rather help our own students versus vision, and which is why the name of the college is also global. Now, starting with the first medal, I would request Secretary Ma'am, President of the functions, Yaruddin Nair Sahab, Ahmed Sahab, Manzoor Sahab, all of you to please, and I request the crowd also to please give a standing ovation for Mustafa Hassan Askari Sahab and his foundation. Please give away the award to Mustafa Sahab, his foundation, Helping Hand Foundation. Thank you, everyone. The medal and the particular award for community service after my father's passing away has been renamed as K. Marifuddin Memorial Award, and we put in a lot of value to it. So the K. Marifuddin Memorial Award for 2024 has been given to Helping Hand Foundation and the backbone, Mr. Mustafa Hassan Askari Sahab. Thank you, sir. Now coming to the PhD category, I request Professor Amirullah Khan Sahab and Professor Manzoor Hussain Sahab to please, if you can step in front of the dais so that we can do the whole activity. Secretary ma'am also, if you can accompany them.
So the first candidate is Ms. Shamim Sultana, daughter of Mr. Afzal Mohammed Sahab, for completing her PhD in pharmacy from Heatham University. Ms. Shamim Sultana. Next is Ms. Samreen Kausar. Ms. Samreen Kausar for completing her PhD in chemistry from Maulana Azad National University. This is Ms. Shamim Sultan on the dais. Next is Ms. Samreen Kausar. Ms. Samreen Kausar for completing her PhD in chemistry from Maulana Azad National Urdu University. Ms. Samreen Kausar. Next is Mr. Sayyid Tawheed Ahmed. Mr. Sayyid Tawheed Ahmed for completing his PhD in Unani medicine from NTR University of Health Sciences. This is Ms. Samreen Kausar, who has done a PhD in chemistry. Thank you. Mr. Sayyid Tawheed Ahmed for completing his PhD in Unani medicine from NTR University of Health Sciences. Son of Mr. Sayyid Hyderabad Sahab. Sayyid Tawheed Ahmed. Next is Mr. Muhammad Najib Khan Sahab. Sayyid Tawheed Ahmed for completing his PhD in Unani medicine. Thank you, sir. Muhammad Najib Khan for completing his PhD in Unani medicine from NTR University of Health Sciences. Muhammad Najib Khan. Muhammad Najib Khan for completing his PhD in Unani medicine from NTR University. Son of Dr. Muhammad Naseeb Khan Sahab. It's very important to mention the parent because half the work is done by the parent. Now we are coming to the intermediate level. The first is Ms. Mahwish Mehreen. Ms. Mahwish Mehreen, daughter of Mr. Shafiq Ahmed Sahab, for securing 99% of marks in intermediate. Ms. Mahwish Mehreen, daughter of Shafiq Ahmed Sahab, for securing 99%. Absolutely amazing. I request Ziauddin Nayyar Sahab to please come in along with Manzoor Hussain Sahab. Ms. Afifa Nahid. Ms. Afifa Nahid, daughter of Shakil Ahmed Sahab, for securing 98.2%. Ms. Afifa Nahid for securing 98.2%. Muhammad Affan Sharif. Muhammad Affan Sharif, son of Khadir Sharif Sahab, for securing 97.7%. Muhammad Affan Sharif for securing 97.7%. These percentages were not heard of when we were smaller, but now you can see the level going up and up, which is very good to see. Mustafa Ali Qureshi, Muhammad Mustafa Ali Qureshi, son of Muatisham Ali Qureshi Sahab, for securing 97.7%. Mustafa Ali Qureshi for securing 97.7%. Muhammad Abdul Wase Umair. Muhammad Abdul Wase Umair, son of Abdul Wahab Zubair Sahab, for securing 97.6%. Muhammad Abdul Wase Umair. Muhammad Abdul Wase Umair for securing 97.6%. Next is Muhammad Azhan Saad. Muhammad Azhan Saad, son of Jamaluddin Sahab, for securing 97%. Muhammad Azhan Saad for securing 97%. Muhammad Salahuddin Shams, son of Muhammad Shamsuddin Sahab, for securing 96.4%. Muhammad Salahuddin Shams.
Salahuddin Shams for securing 96.4%. Next, the list goes for the students of TIMRIS. The TIMRIS are, for people who don't know, the Telangana Minority Residential Institutions, which have been a landmark, which are doing a landmark job for minorities in the state of Telangana, founded by the last CM, Mr. KCR. And ये एक तारीखी काम किया गया है, and we are extra proud of these students from TIMRIS. The first student is Mohammad Nizamuddin for securing 97%. Mohammad Nizamuddin. An extra round of applause for the students of TIMRIS, please. Mohammad Nizamuddin for securing 97%. And this is one of the jobs the government has been doing for the minorities in Telangana with outstanding infrastructure and education in TIMRIS schools and colleges. Mohammad Khalid for securing 97.8%. Mohammad Khalid for securing 97.8%. Sheikh Mohammad Sohail for securing 97.4%. This is Khalid, and the next will be Mr. Sheikh Mohammad Sohail for securing 97.4%. Mohammad Abdul Sohail for securing 95.3%. Mohammad Abdul Sohail. After Sohail, it is Mr. Mohammad Talha for securing 96.7%. Mohammad Talha for securing 96.7%. Mr. Akbar Pasha for securing 96%. Akbar Pasha for securing 96%. And I would like you all to know that in the formation of TIMRIS institutions by the government, the Tamir Millat also played a part, which Ziauddin Sahab is heading. He's the president of Majlis Tamir Millat. He was one of the Tamir Millat was one of the advisors of this on this for the government. Ansa Khan and her brother apparently is receiving the award on her behalf. Miss Ansa Khan, 97.7%. Miss Ansa Khan, her brother is receiving the award on her behalf. Mohammad Feroz for securing 98.3%. Mohammad Abdullah for securing 95.3%. Mohammad Abdullah for securing 95.3%. Sheikh Abuzar for securing 94.9%. 95% we can call it. Abuzar. Mohammad Sumair Ahmad for securing 96.4%. Mohammad Sumair Ahmad. Mohammad Shafiuddin for securing 96.8%. Mohammad Shafiuddin for securing 96.8%. M.A. Rehan Siddiqui for securing 96.9%. Rehan Siddiqui.
The next list of gold medals is slightly biased list, which because they are students of Medina, CBSE, and we have obviously a little bias towards them. But yes, all of them are together. Let me complete this list first. So there's a small confusion with the certificates. This was a list of Cambridge students, and we are extremely proud of them. And the government has worked wonders with these institutions, I must say. The next list is for Medina Public School students of CBSE. The first girl is Lubna Sultana. Ms. Lubna Sultana for securing 98%. Ms. Lubna. Ms. Lubna Sultana for securing 98% from Medina. Ms. Amtul Rahman Fatima, daughter of Abdul Rahman Sahab, for securing 96.9%. Amtul Rahman, daughter of Abdul Rahman Sahab. Sayyida Hana, daughter of Sayyid Akhil Haidar Sahab, for securing 96%. Sayyida Hana, daughter of Sayyid Akhil Haidar Sahab. Muhammad Abdul Mateen Farooqi, Muhammad Abdul Mateen, son of Abdul Majid Farooqi Sahab, for securing 95%. Abdul Mateen, son of Abdul Majid Sahab, and if I remember correctly, Abdul Mateen, if I remember correctly, you are the one who is also in shooting involved. Yes, and he is going to the nationals in the shooting competitions, and which he started training in Medina as part of his CCA co-curricular activities in Medina. Abdul Mateen Farooq, student extraordinary that he's also in academics and also in co-curricular activities, and now he's going professionally shooting national level. Munazza Muhammad Abdul Rahman, Munazza, daughter of Abdul Rahman Sahab. Munazza Abdul Rahman, daughter of Abdul Rahman Sahab. Next is Firdaus Fatima, daughter of Abdul Jalil Sahab. Firdaus Fatima, daughter of Abdul Jalil Sahab. Sayyida Afia Hashmi, daughter of Sayyid Mudassiruddin Sahab. Sayyida Afia, daughter of Mudassiruddin Sahab. Rukhayya Bashir, daughter of Bashir Ahmad Sahab. Rukhayya Bashir. Sayyida Tahura Khadri, daughter of Imran Alam Khadri Sahab. Afifa Shahbaz, daughter of Shahbaz Sharif Sahab. Afifa Shahbaz, daughter of Muhammad Shahbaz Sharif Sahab. Afira Muhyiddin, daughter of Zakriya Muhyiddin. Afira Muhyiddin. Afira is the daughter of also Vice Principal Ma'am, Ms. Khadija Nusrat Ma'am. So an extra round of applause for her, please. Ms. Afira Muhyiddin, the backbone, one of the backbones of the college school, Ms. Khadija Nusrat Ma'am. This is her daughter. Muhammad Fasahat Ali, son of Mr. Nasir Ali Sahab. Fasahat also was the school captain during his batch. And apart from academics, he's a very intellectual and very good speaker on the stage. His oratory skills are also very good. Fasahat Ali, son of Muhammad Nasir Ali Sahab. And a small flex for the Medina students is that I think he was also Mr. Medina, right? Because we remember the Mr. Medina of our batch, Muhammad Fasahat Ali, son of Nasir Ali Sahab. Nishat Fatima, daughter of Ehtishamuddin Sahab. Nishat Fatima. Nuria Siddiqa, daughter of Mazharuddin Siddiq Sahab. Nuria Siddiqa, daughter of Mazharuddin Siddiq Sahab. Atika Sabah, daughter of Abdul Khadir Khan Sahab. Atika Sabah.
Huria Mahveen, daughter of Shamsuddin Sahab. Huria Mahveen. Safwa Amina, daughter of Ahmad Muhyiddin Sahab. Safwa Amina. The next list is of SSC students. The first name is Ms. Afifa Zainab for securing 10 GPA. Afifa Zainab, daughter of Latifuddin Sahab. Afifa Zainab, daughter of Latifuddin Sahab. We consider the parents, we mentioned the parents' name also because half the work is done by the parents. Ms. Afifa Zainab, daughter of Latifuddin Sahab. Nuri Nunnisa, daughter of Hafiz Muhammad Hafiz Sahab, securing 10 GPA. Nuri Nunnisa. Gausia Sheikh. Gausia Sheikh, daughter of Sheikh Muhammad Sahab. Please applaud them. They have worked tremendously hard. It's not easy at all. Ms. Gausia Sheikh. There's a small motivation for all of these people so that these are just the beginning of their educational career. They still have a long way to go and we hope that they make our community proud. Ms. Gausia Sheikh, daughter of Sheikh Muhammad Sahab. Aisha Siddiqa, daughter of Muhammad Abdul Khadir Sahab. Aisha Siddiqa. Aisha Siddiqa, daughter of Muhammad Abdul Khadir Sahab. The motivation is such that in 2008, in this very hall where we are sitting right now, APJ Abdul Kalam had also visited. And we used to hear stories of that particular visit. I met him. And there are certain people who still remember the row in which they were sitting when APJ Abdul Kalam had visited the school. And it was a very, very nice moment for all of us. The pinnacle of this thing is that APJ Abdul Kalam also came and he asked us about the results, my father, and he was asking what is the specialty and everything. When he heard about all that, he was extremely happy and proud that the community is also producing over here. Because anyway, the misconception is that from Hyderabad, city of Nawabs, that is a general this thing. Ms. Aisha Siddiqa. Mohammadi Firdaus, daughter of Mirza Shafiq Ahmad Beg Sahab. Mohammadi Firdaus. Muhammad Abdul Majid Rayan, son of Muhammad Abdul Halim Rizwan. Muhammad Abdul Majid Rayan. A small request from Dr. Muhammad Najib Khan Sahab, who just received his gold medal for completing his PhD in Unani medicines, that he wants to speak for a couple of minutes. So I request you all to give a couple of minutes to Dr. Muhammad Najib Khan Sahab. Please come, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, thank you very much from bottom of all of the gold medalist recipients to Madina Education Society members. Especially Sabina aunty, I would prefer calling her aunty because you might not be knowing me, madam. I am Dr. Muhammad Najib Khan, son of my beloved and honorable Dr. Muhammad Nasib Khan Sahab. He is also a Unani physician and myself I am also a Unani physician.
And what I have observed from the last 1.5 hours is that nobody, कोई एक फर्द भी यहाँ से उठ कर नहीं गया. This is the special quality of Madina Education Society that they keep mind, सबको इतना मुतहिद रखते हैं और इतना बाइंडेड रखते हैं हर इवेंट पे. तो एक्चुअली एक छोटा सा वाकया आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपके कुछ कीमती पल लिए कि जैसा मैं एंटर हुआ यहाँ पर मुझे एक छोटा सा सीन याद आ गया जो मुन्ना भाई MBBS में होता है. When when Sanjay Dutt enters into the classroom and everybody stood up thinking that he is the professor or something. The similar thing happened. I'm just 42 by the way. And मैं जब देखता हूँ मेरे सामने कि मेरे से आधी उम्र के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, तो मुझे अपने आप से अपना बचपन याद आ रहा है. एंड एक छोटा सा लतीफा भी इस बात पे याद आ रहा है कि जब एक टीचर ने एक क्लासरूम से पूछा कि बताओ बच्चों कि अगर एक रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर है तो बताओ मेरी एज कितनी है. बच्चों ने सोचा कि ये तो कोई तो बनता नहीं है, कोई लॉजिक तो है नहीं इस क्वेश्चन के पीछे. उनमें से एक बच्चा बहुत शार्प था आप लोगों की तरह, वो खड़े होकर बोला 42 इयर्स. टीचर तो बोले बिल्कुल बराबर है, आपने कैसे गेस किया? तो बोले कि हमारे पड़ोस में एक लड़का है वो 21 इयर्स का है और आप क्रैक है. तो उस तरह आज कुछ हो गया यहाँ पर कि when I entered and many of the students started contacting me कि अब गोल्ड मेडल यही दिया जा रहा है, तो उनको मैं बताया मैं I'm also a recipient of one of the gold medal and from bottom of my heart I'm very thankful to. And you might be knowing this Unani medicine in which I've got this PhD. It is the only professional course in whole India which is in Urdu medium से. पूरे हिंदुस्तान में एक वाहिद प्रोफेशनल कोर्स है जो उर्दू मीडियम से है. और मैं बचपन से यूं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेहद करम है कि मुसलमान घराने में पैदाइश हुई और स्कूल जाने से पहले मैं मदरसा जाया करता था. जब हमारी पहली जो क्लास थी वो हमारे मदरसे की थी जो हमारे पड़ोस में मदरसे तजवीदुल कुरान. साथ ही साथ हमको असली तालीम जो दी मेरे माँ बाप ने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था, मेथोडिस्ट का मैं स्टूडेंट रहा हूँ. अगेन इंटरमीडिएट उसके पड़ोस में सेंट मेरीज हुआ करता था, उसका मैं तालिब इल्म रह चुका हूँ. उसके बाद में सारा क्रिश्चियन मिशनरी बैकग्राउंड से होते हुए मतलब एजुकेशन का बैकग्राउंड होते हुए पहली बार जब मैं दाखिल हुआ कि यूनानी कॉलेज में गवर्नमेंट इस्लामिक डिग्री कॉलेज which is the prestige यूनानी मेडिकल कॉलेज in whole तेलंगाना और the biggest institute in whole India by the way. और इस वक्त एक वाहिद कॉलेज है यूनानी के लिए बहुत जो अपनी खिदमत पहचान दे रहा है. तो वहां जब दाखिल हुआ तो वहां दाखिल होने के बाद में पता चला कि जितनी असली तालीम थी वो उर्दू मीडियम या उर्दू निसाब तालीम के तहत मतलब मैं इसको जम नहीं रहा था, मैं इसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा था. लेकिन थैंक्स टू द इंस्टीट्यूट्स came up Arifuddin साहब, मेरा कलीग था, he is from मदीना स्कूल. उसके साथ मैं बहुत खुश था. फिर उसके बाद असर मेरा BS कंप्लीट हुआ, MD कंप्लीट हुआ, PhD कंप्लीट हुआ. अल्लाह का करम है. उसके बाद में जब you might be astonished that I joined my PhD course when my third child was born. अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था without taking much of your time. देखिए शुरू करना बड़ी बात होती है, आगाज करना बड़ी बात होती है. आपको जिंदगी कहाँ तक लेके जाएगी, कितना आगे जाएगी, उसकी कोई लिमिट नहीं है. स्काई इज द लिमिट. तो इसीलिए अल्लामा इकबाल ने जैसे कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर बनाने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है. तो आप शुरू जो करते हैं अपना करियर, उसके बाद कहाँ तक लेके जा सकते हैं वो तो स्काई इज द लिमिट. बशर्ते कि आपकी नीयत अच्छी हो, मेहनत लगन हो. और आई वुड अप्रिशिएट कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा बहुत अहम किरदार है जो अभी अच्छे से कर रहे हैं. आरिफुद्दीन साहब का एक छोटा सा वाकया, जब मेरी बच्ची का एडमिशन में 2014 में यहाँ करवाने आया था एंड मेनी ऑफ द पेरेंट्स केम टू गिव द इंटरव्यू. आपको जानते हैं आजकल सभी जगह स्टूडेंट्स का नहीं पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है फॉर टेकिंग द एडमिशन. तो यहाँ जब आए थे हम लोग, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स वर सिटिंग आउटसाइड एंड आरिफुद्दीन सर वाज टेकिंग द इंटरव्यू. सब लोग बस 5-10 मिनट के लिए अंदर जा रहे थे फिर वापस आ रहे थे. मैं जब अंदर गया इट टुक अबाउट 45 मिनट्स देयर और वो 45 मिनट्स में उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे लाइफ लेसन्स दिए कि मैं भूल नहीं सकता. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैं खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बेटी यहाँ पर पढ़ रही है. एंड अगेन दिस अवार्ड इज नॉट बायस्ड बाय द वे बिकॉज़ आई डोंट नो इज टू स्टडी हियर. इट्स टोटली बिकॉज़ दे आल्सो डिडंट नो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई केम इनटू द डायस एंड गिव माय इंट्रोडक्शन टू सुबह एंड मारिया मैडम. तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि दिस इज नॉट द बिगिनिंग, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज ओनली द बिगिनिंग. और आप बच्चों से मैं खास तौर पे कहूंगा जैसा अल्लामा इकबाल ने कहा
کہ سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. میں چاہتا ہوں کہ بچے بھی میرے ساتھ بولیں، سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. پلیز اسٹوڈینٹس، سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. پھر سبق پڑھ. علامہ اقبال یہاں نہیں رکے، انہوں نے کہا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much, Dr. Sir. And a couple of comments of wisdom from you. And I did not know actually that you are a parent here, sir. And so this is obviously not a biased award. And you have quoted Allama Iqbal on the foremost authority on Iqbal sitting right over here. Sir Ziauddin Nair Sahab also runs the Iqbal Academy at Masa Bank. He is the president of that. Once again, I would like to thank all of you, the parents, the students, the guests, because ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप जैसे लोग आकर यहाँ पर हमारे साथ बैठते हैं. आमिरुल्लाह खान साहब, मंजूर साहब और मुस्तफा साहब को ऑलरेडी प्रायर कमिटमेंट्स थे. हम भी क्योंकि जल्दी करना चाह रहे थे तो शॉर्ट नोटिस पर हो गया है. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोग भी टाइम निकाल कर आए. और क्योंकि वीकेंड है, काफी ट्रैफिक होगी बाहर, आई कैन अंडरस्टैंड. आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड द यंग 10th graders and intermediate pass out students. आप लोगों का नाम हम न्यूज़पेपर में हमेशा देखते रहना चाह रहे हैं. अल्लाह करे आप लोगों को और तरक्की दे हमेशा. आमीन. बहुत बहुत शुक्रिया.